why assessment is important, and like for doing assessments, what should be the count? What would be the the ambience part and the climate needed for the assessments, or like you can say like what kind of structure is required for the counseling process. Okay, tell me, what do you understand by the assessment? आप लोग क्या समझते हैं assessment से, like what is assessment, or like because in psychology assessment have a very significant role. Sir, I think it's a collection, it's a process of collection regarding our interest, regarding to the abilities or aptitude or personality, like beliefs and all. Okay, anybody else? Assessment, or I would say psychological assessments. असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन करना किसी भी चीज का. As a psychologist or as a counselor, we are dealing with the human behavior, so the use of standards or systematic procedure for observing the behavior. Or when we say psychological assessment, by virtue of means, some psychological means, we'll try to observe the behavioral, emotional, and psychosocial aspects of an individual. So using the psychological assessment tools that are available, the tests. Yes, we do use psychological test for psychological assessment. So assessment, psychological assessment is a very broad term or broad phenomena. And using psychological test is one of the element of psychological assessment. And assessment is an ongoing process. And see, as soon as the client comes to you for any counseling part, so since from the beginning assessment starts. होता है कि नहीं होता? Suppose if a person is coming with you the issue of interpersonal relationships, अब पहली बार आपके पास आया है कोई अपनी इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर, तो आप असेसमेंट कब से स्टार्ट करेंगे? हाँ, सर जैसे ही कोई अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए अपनी प्रॉब्लम को लेके साइकोलॉजिस्ट के पास आएगा, काउंसलर के पास, तो आई थिंक सबसे पहला तो वो अंडरस्टैंड करना, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको असेसमेंट ही करना पड़ेगा. आई थिंक दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप. सी, असेसमेंट का मतलब सिर्फ किसी टेस्ट को एडमिनिस्टर करना ही नहीं होता है. असेसमेंट का मतलब आपका इंफॉर्मेशन को गैदर करना और उसको इंटीग्रेट करके एक मीनिंगफुल वे में इंटरप्रेट करना भी होता है. तो लाइक अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम को लेके आ रहा है, तो सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग your assessment will start, which involves the integration of all the information from the multiple sources. Yes, sir. And for that, we have to take an interview for Yes. getting information. For assessment, there are different techniques. We need to know the pain points. We need to know the pain points. उनके problems क्या क्या हैं? एक क्वेश्चनर बना करके उनसे पूछना चाहिए. ओके, एक क्वेश्चनर बना के आप पूछ सकते हैं. वैसे पर्पस क्या होता है असेसमेंट का? लाइक व्हाई वी डू असेसमेंट?
What is the purpose of doing assessment in psychology or in behavioral sciences? सर अगर असेस करेंगे तभी उसके ऊपर कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन हाउ फॉर द इम्प्रूवमेंट वी कैन ओनली स्टार्ट वर्किंग वंस इट इज असेस्ड. सो असेसमेंट इज मूल्यांकन जो भी हम करते हैं या परीक्षण जो भी हम करेंगे उसको एक उसके ऊपर जब खुद को समझ आएगा तभी हम उसके वी कैन वर्क ऑन इट. Okay. It is help to know the client's strength and weakness, diagnose student problems. Okay, so basically in behavioral sciences or in psychology, we do assessments for the understanding of the problem को understand करने के लिए, diagnosis purpose के लिए, to diagnose the problem of our client. And if you are working in the schools, definitely career planning के लिए, education planning के लिए, and sometimes as a school teacher or as a special educator or as a counselor or therapist, you can also do assessments to plan out your interventions. And sometimes we do assessments to evaluate our interventions also, like how much your intervention has been worked on a specific population. Suppose आप एक school teacher हैं और आपने you are working with the children with special needs or maybe the children with learning disabilities. To identify these children, you do have to do assessments. And for the planning of intervention, again you have to do the assessments. और आपने इंटरवेंशन दे भी देते हैं. इंटरवेंशन अब इंटरवेंशन कैसी हुई है और बच्चे कितना सीख पाए हैं, कितना नहीं सीख पाए, उसको देखने के लिए भी आपको बच्चों के असेसमेंट्स करने पड़ेंगे. तो असेसमेंट एक बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है काउंसलिंग प्रोसेस में. और जो आप असेसमेंट करते हैं दैट शुड बी होलिस्टिक. And it should be like accurate also. And as a counselor, you need to keep the responses of the respondent confidential. You have to build a trust with your client, or you need to ensure your client that his or her responses will be kept confidential. Or without taking the prior consent, you will not use his or her information in any platform. Like, what are the different methods of doing assessments? Sir, case study method and I think interview methods should also be there. Case study method, interview method, okay. Projective technique also used like that. Okay, projective techniques. We can also take personality tests. See, these are projective techniques or psychological tests, administering psychological tests. That is psychological testing. And psychological testing is one of the aspect of psychological assessment. आप इंटरव्यू कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, आप केस स्टडी कर सकते हैं. यस, आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यूज कर सकते हैं. क्या होती है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग? Is it different from psychological assessment or is it the same thing? दोनों एक ही चीज है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग? Both are entirely different. Yes. How?
Sir, if Sir, psychological testing, I think it's a broader term, and assessment is something else. Assessment is not assessment. Can't be testing. Anybody else? Sir, psychological testing is using the tests which are already prepared by the psychologists, and they are researched upon. So the assessment can be interviewing, then IQ test and personality assessment, behavior assessment, ये सारी चीजें include करके वो I think एक मेरे accordingly जो वो है वो एक broader term है, whereas testing जो है वो particular सिर्फ उसके टेस्ट्स के को करना जो कि कोई particular जो हमारे बने हुए हैं psychological tests उनको यूज करके. ओके, तो उनको यूज करके तो हम पर्सनालिटी को भी टेस्ट कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को भी टेस्ट कर सकते हैं, एप्टीट्यूड को भी कर सकते हैं. हाँ जी सर, राइट. Assessment is basically a very broader phenomena rather than testing is a very narrow term. Testing is a part of assessment, and assessment is a process, ongoing process of collecting information and integrating information with the help of various techniques like formal, informal. Sometimes your techniques can be qualitative in nature and quantitative in nature. Whereas in psychological testing क्या होता है? Test is a standardized procedure of measuring psychological characteristics of a person. So testing is used to verify your assessment also. Like when you collect the information, understand the client's problem, and when you want to quantify those assessments, these are the standardized tests which you conduct to verify this assessment also. As I have mentioned, yes, testing is a very much part of the assessment. What is the एक और चीज है, जब हम असेसमेंट करते हैं तो we need to ensure that the kind of psychological test you are using, it should be standardized. When I'm saying standardized, what did it mean? हमें हमेशा एक अच्छा टूल यूज करना चाहिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए. एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल यूज करना चाहिए. स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है? सर जिसके ऊपर कोई रिसर्च हुई है. Reliable and valid. Reliable. That should be reliable and valid. Okay, yes. Which has been validated by international standards. Not about validated by the international standards. It should be valid in the particular context. Yes, sir. The test must have the good validity. The test must have the reliability. The test must have the objectivity. The test must have some norms. If the test is meeting all these criteria, then only we will use that particular test. ठीक है. अब इन साइकोलॉजी बहुत सारे अलग अलग टेस्ट हैं. कौन कौन से टेस्ट हैं हमारे पास साइकोलॉजी में मेजरली जो काउंसलिंग प्रोसेस में यूज होते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, पर्सनालिटी टेस्ट हैं, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट हैं. इंटेलिजेंस टेस्ट के कोई एग्जांपल बताओ जरा. 16 PF. वो तो पर्सनालिटी का है. मैं आस्किंग इंटेलिजेंस टेस्ट. पर्सनालिटी. इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कौन से हमारे पास? Intelligence. कोई दो नाम बताओ. भाटिया बैटरी. भाटिया बैटरी, राइट. इसे बैटरी क्यों बोलते हैं?
Yes, sir. I think it's Raven's test me intelligence test me. Spell Yes, RPM. वो अलग रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। बट अभी आपने बोला ये वाला भाटिया बैटरी, इसे हम बैटरी क्यों बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैटरी? एनी आइडिया? किसी को आइडिया नहीं कि हम इसको बैटरी क्यों बोलते हैं? भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें वर्ड यूज है बैटरी। भाटिया बैटरी है, निमेंस बैटरी है, बहुत सारी बैटरीज हैं, बट इनको बैटरी क्यों बोला जाता है? बैटरी का मतलब है दैट पर्टिकुलर टेस्ट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ टेस्ट, और दिस भाटिया बैटरी of performance test consist of 7 different types of test, so that is why we call it battery कि यहाँ पे multiple test involved है। और आप देखेंगे तो भाटिया बैटरी में आई थिंक 5 टेस्ट हैं। को ब्लॉक टेस्ट है, और आपका एक डिजाइन टेस्ट है ना, और एक पास अलोंग टेस्ट है आई थिंक। तो अलग अलग डिफरेंट आई थिंक 5 टेस्ट हैं भाटिया बैटरी में। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है जो एक नॉन वर्बल टेस्ट है जिसमें 60 आइटम्स हैं। बैचलर इंटेलिजेंस स्केल है आईक्यू के लिए, इंटेलिजेंस के लिए। सबसे पहला टेस्ट जो बना था कौन सा था इंटेलिजेंस का? बिने टेस्ट, विने एंड सैमन इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसके बाद स्टैनफोर्ड विने टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट हैं। आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसका कोई आइडिया है? हमारे पास जो डिफरेंट टेस्ट हैं, इंटरेस्ट के टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, साइकोलॉजी में यूज होते हैं। एनी आइडिया, एनी नेम? चलो मैं देता हूँ एक डिफरेंट, ये तो बहुत ही फेमस टेस्ट है, डीएटी, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। Sir, I think there's one mechanical aptitude test also. उसी का पार्ट है, उसमें है डीएटी में बहुत सारे टेस्ट हैं, उसमें मैकेनिकल का भी एक पार्ट है। आपके वोकेशनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ब्लैंक है, फूडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेस्ट बैटरी है। अभी आप लोग प्रैक्टिकल में करेंगे इंटरेस्ट टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट है हमारे पास। पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम बताओ जरा। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सर थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, हो गया चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। क्या चीज? 16 पीएस 16 पी, सर। 16 पीएफ सबको पता है। और कोई 16 पीएफ के अलावा? फर्स्ट ईयर में किया 16 पीएफ के अलावा? बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट। बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट। और कोई? एरिक्सन का भी तो है, एरिक्सन पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। नियो एफएफआई। सर मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर पी एमबीटीआई। एमबीटीआई राइट। We have projective test also in psychology to assess the personality. Projective test कौन कौन से हैं? फिर टैट, थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, राइट। थीमेटिक के परसेप्शन टेस्ट। और कुछ है? रॉशार्क इन प्लॉट है, सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ड्रॉ पर्सन टेस्ट। So in psychology we have different tests for different purposes. We have tests for interest, we have tests for
aptitude, attitude. We have tests for personality. We have tests for neurodevelopmental issues. We have tests for personal projective. We have tests for intelligence. बट जब हम बात करते हैं इन सब टेस्ट की, तो ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो सब एक वेल स्टैब्लिश्ड और वेल स्टडीड टेस्ट हैं जिनको एम्पिरिकली स्टडी किया गया है. बट जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट में कुछ इश्यूज भी आते हैं. और सब इशू क्या आते हैं असेसमेंट में? एनी आइडिया व्हाट आर द इश्यूज इन असेसमेंट? So resources, like Resources, sometimes it yes, is time consuming. it is time consuming, right? Time and this money consuming, right? Misuse or overuse of test. कैसे होगा मिसयूज और ओवरयूज? कैसे होगा? So the confidentiality has to be maintained. Confidentiality is one of the important aspects, right? वो ठीक है. जिसका असेसमेंट हो रहा है सर वो कोऑपरेट नहीं करता है तो वो भी एक इशू है. Yes, right. Sir, bias is also a very big issue. Biasness, yes, biasness Yes, is one of the biasness. issues. As you told in the other class, ki should not be a family member. Should not be a family member, right? हाँ, तभी वो bias हो जाते हैं if they are family member now. Right. और कोई प्रॉब्लम आ सकती है. Sometimes it's very difficult to choose a correct test, appropriateness of the test. कभी कभी मालूम चल रहा है कि एंजाइटी की जगह हमने डिप्रेशन का टेस्ट चूज कर लिया. Issues of reliability and validity of the test. कभी कभी हम क्या करते हैं कि जिनकी रिलायबिलिटी दी हुई है ना, हम उन टेस्ट को यूज कर लेते हैं. बट इट्स नॉट अ fair game in psychology and behavioral sciences because reliability doesn't mean that the test is valid. The test is measuring the same thing which is supposed to measure. Reliability वो नहीं बताती है. We cannot use a test which have their reliabilities. It could be test or parallel or split half. As a counselor, as a student of psychology, you should know that we use only such tests which are reliable as well as valid. So validation of the test is very much important because every valid test is a reliable test, but every reliable test is not a valid test. इस चीज को याद रखना. Second issue is like we need before administering any test on your client, the consent need to be taken. Sometimes environmental factors plays a very important role in making it complex or like sometimes the competency of the counselor, if the counselor is not much trained enough, तो प्रॉब्लम हो सकती है. और क्या हो सकते हैं? और कुछ हो सकता है, और कोई फैक्टर्स हो सकते हैं जो मतलब असेसमेंट को कॉम्प्लेक्स बनाए. सर कुछ कल्चरल या एथनिक डिफरेंसेस भी हो सकते हैं जिनकी वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं. See, cultural or ethnic differences, right? Cultural or ethnic differences, as a counselor, you should know the cultural aspects from where your client is belonging. क्योंकि कुछ चीजें हैं जो एक कल्चर में
वैलिड होंगी, दूसरे कल्चर में नहीं वैलिड होंगी. तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस एंड एथनिक डिफरेंसेस. So language barrier. Yes, sometimes language barrier. Okay. अगर आपके पास suppose if you belong to a Delhi and some like one of कोई client जो है वो केरला से आता है जिसको कोई हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, then how would you go ahead with him or her? कैसे करेंगे आप assessment and all? Either you will refer to the person who is well versed in maybe Malayalam or in or you can use a translator. So language can be a barrier in sometimes in the assessments. So language can be a barrier, but in the digital age, I think translation is easier. तो अब ये एक plus point है. Google translator को use करके we can translate. Although it is difficult. मतलब ये नहीं है कि आप क्योंकि 1-to-1 contact जो होता है, जो हम immediate response होता है, वो मुश्किल हो जाता है उसमें. But sometimes Google translation is very vague. मतलब आपको खुद समझ में नहीं आएगा. Right, जी. So Google translation is a recipe for disaster. Sometimes. Yes, sir. And as a counselor, it is your like आप मुझे बताएं कि suppose आपका एक काउंसलिंग सेंटर है, तो उस काउंसलिंग सेंटर का क्या एम्बियंस होगा, किस तरह का क्लाइमेट होगा? सर ठीक बात है, ये आपने उससे रिलेटेड पूछा है कि टेस्टिंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए. Right, testing conditions because environmental factors plays a very important role in psychological assessment. Right, so right. The climate of the counseling process is also very important. Sir, peaceful, calm, amicable environment. Okay. Proper lighting should be there. Temperature should be comfortable. Okay. Yes, proper lighting, proper ventilation. The room should be soundproof, that so that the confidentiality can. Isolation, हाँ, that जो जिस रूम में आप काउंसलिंग सेटअप आपने बनाया, it should be like very soundproof, ताकि बाहर के लोगों को उसकी आवाज नहीं सुनाई दे. कभी-कभी होता है कि like client doesn't want that उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसे कोई सुने नहीं, सिर्फ वो आप ही से शेयर करना चाहते हैं. Basic amenities in your chamber so that they feel comfortable. Yes, basic things. और क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जब आप the client always or should always sit in the front of you, ताकि आप उसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट कर सकें. वो आपके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में नहीं बैठना चाहिए, वो आपके सामने एकदम बैठना चाहिए. Sir, ergonomics of the furniture that you are using so that it becomes comfortable. He feels comfortable being there in that environment. Yes, मतलब you need to establish a rapport in a very good way so that he or she will build a trust on you. You need to apply some counseling skills, initial counseling skills to build a trust. अगर एम्बियंस और क्लाइमेट अगर बहुत एमिकेबल होगा, बहुत रिलैक्सिंग होगा, तो डेफिनेटली जो आपका जो असेसमेंट है वो अच्छा होगा और क्लाइंट को एक client will easily form a rapport with you and easily develop a trust on you, and he or she will share his problems, his feelings, like without any hesitation.
और कुछ हो सकता है इसके अलावा? और दूसरी चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज अ काउंसलर यू शुड नॉट बी सब्जेक्टिव इन योर अप्रोच. वो आया ही आपके पास इसलिए ताकि आप उसे जज नहीं करेंगे, एंड यू विल गिव हिम और हर अ वेरी genuine advice without judging him or her. And as a counselor, it is your duty to identify and make him realize this, his or her strength क्या है, weakness क्या है, coping mechanism क्या है, coping strategies, so that he or she will work upon those aspects. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे बताइए आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट मॉडल ऑफ दिस MPC 22. आप इसको थोड़ा सा पढ़िए, because this in MAPC 22 the first model is all about the basics of counseling processes, what assessments kya hote hain, a psychological assessment testing, what psychological tests can be applied, different, what would be the like climate need to given, ambience. Okay, आप इसको पढ़िए, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा then we will discuss it in the next class. ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Okay. So when are we going to have our exams? एग्जाम्स तो उसका मुझे आइडिया नहीं, बट